तो उसमें लक्ष्मीकांत के हिसाब से कौन सा चैप्टर हुआ? क्योंकि ऐसा तो उसमें अलग से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हाँ जुडिशरी तो है, बट पार्लियामेंट भी है ना, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट भी है। वही तो लेजिस्लेचर हुआ। हाँ, तो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है इंडिया का? पार्लियामेंट ही तो है। यस, ये हो गया। और एग्जीक्यूटिव में हो गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी ऑफ जनरल, राइट। तो ये एक मैंने कहीं से ना वो लिया था एनालिसिस, मतलब मैंने पहले पढ़ती थी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। Dean of checks and balances, provision for checks and balances in Indian Constitution and related judgments. So ये सब इसमें तो मतलब और फिर ये separation of power doctrine ये सब कहाँ है बुक में? मतलब see, this is a political theory actually, but what is separation of power? You know what earlier it used to be, you know, in the, remember Hobbes or any author, any monarchy, for example. In monarchy, there is no separation of power, right? राजा ही लॉ बनाता है, राजा ही कानून इम्प्लीमेंट करवाता है और राजा ही कानून का फैसला करता है। जो पावर होता है कंसंट्रेटेड इन वन हैंड और अ बॉडी पॉलिटिक, जहां पर कुछ लोग डिसाइड करते हैं, राजा और उनके कुछ लोग। फाइन, यस सर। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बट इन डेमोक्रेसी देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, राइट, विच चेक एंड बैलेंस ईच अदर, लाइक पार्लियामेंट, जुडिशरी, राइट। सो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, जुडिशरी क्या करता है, उस लॉ को ये बताता है कि वेदर लॉ इज जस्ट, फेयर और रीजनेबल और नॉट। फाइन, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है कि लॉ बनाता कोई और है और उसका इंटरप्रिटेशन कोई और करता है, राइट। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, पुलिस का काम है आपको पकड़ के ले जाना। कानून है, आपने कानून वायलेट किया, आपको पकड़ के ले जाएगा, राइट। अगर कानून नहीं है तो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि आपको पकड़ के ले जाएगा। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप रोड पे डांस करने लगे, पर डांस करना कोई क्राइम नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ सकती, हाँ, यस। बट रोड पे किसी ने किसी को छुरा मार दी, गोली मार दी, इट इज ए क्राइम। देयर इज already existing law under which a police can arrest someone, right? Yes, sir. But police has no right to decide कि इस क्रिमिनल के साथ क्या करना है, इसको यहीं पे मार देना है या इसको जेल ले जाना है। नो, इट्स जुडिशरी वर्क। जुडिशरी डिसाइड करेगी कि what we have to do with this person, right? Yes, sir. Are you getting my point? Yes. So separation of power is a modern concept in democracy, where power is not concentrated in one hand like in monarchy or in a totalitarian state or in a autocracy, right? Power is dispersed. Power क्या होता है? Dispersed होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, like legislature, executive and judiciary, right? So who has given a theory of separation of power? Montesquieu. कौन दिया था? Montesquieu. Yes, his book is The Spirit of Law. उस किताब में उन्होंने ये थियरी दिया था। फाइन। तो सर ये मतलब ऐसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर करके तो शायद बुक में नहीं दिया हुआ, वी जस्ट हैव टू लर्न लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ऐसे डॉक्ट्रिन तो अलग से नहीं दिया हुआ ना लक्ष्मीकांत में? नो, ऐसा कुछ नहीं। ये कौन सा टॉपिक नंबर है पेपर जीएस पेपर 2 का? ऐसा लिखा सर ये है 1 2 3 थर्ड है,
Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. तो ठीक है ना, वो तो आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा। मैंने पढ़ाया पार्लियामेंट, मैंने पढ़ाया पार्लियामेंट, राइट। मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ाया है, मैंने आपको जुडिशरी पढ़ाया है, राइट। यस सर। और फिर मैंने तीनों के पावर भी पढ़ाए कि लेजिस्लेटिव का पावर क्या है, व्हाट इज पार्लियामेंट, आपको पता है व्हाट इज पार्लियामेंट, पता है। फोर्थ फंक्शन, इट इज an institution of accountability, it is the highest supreme legislative legislative making body, it is a supreme legislature, बताया है। yes sir. It is also institution of representation, पता है कि नहीं। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों का काम है। अब आपको आर्टिकल 368 बताया है, अमेंडमेंट, power of amendment. So all law making authority is vested with the parliament, right, or the state legislature in the state. Fine. All and doctrine, sorry, doctrine of checks and balances. Check and balance, no institution can surpass the limitation. What is basic structure doctrine? Basic structure doctrine is a limitation on the parliament. Yes, parliament can amend any part of the constitution, but it cannot touch, destroy, or demolish the basic structure, the basic features of the Indian constitution, like democracy, like free and fair election, like rule of law, right? Yes, sir. Right. So through this, how judiciary making a check to the parliament. Fine. Sometimes parliament also checks the Supreme Court. Okay, this is not your authority. शांत रहो, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ बनाना नहीं। फाइन। यस सर। ऐसी चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। यस। What the idea? और ये था कि एक सेकेंड, ये कैबिनेट कमेटी, there are different cabinet committees और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, हाँ, बोलिए मैं बोलता हूँ। ये अलग होते हैं ना, कमेटी और सेक्रेटेरिएट अलग है। कैबिनेट, एग्जैक्टली, कैबिनेट कमेटी इज डिफरेंट एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज डिफरेंट। Cabinet secretariat is, a kind of a part of executive, but cabinet committee is part of legislature. आपको बताया है parliamentary standing committee, departmental related, departmental related, हाँ, ad hoc committee बताया आपको। तो सर ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है और ये में नहीं है, बुक में है, ये नहीं मिला मुझे। नहीं, ये नहीं है। तो ये नहीं करते एज पर द सिलेबस नहीं करना होता हमको, तो लिखना पड़ेगा पॉलिटिक्स एक बुक ले। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट टू राइट डाउन, बट नॉट नाउ, बट वी विल राइट, आई विल राइट बाय द नेक्स्ट ईयर, आई विल डू दैट। क्या चीज सर? यू विल राइट अ बुक या ऑन पॉलिटी। तो सर ये हम ये नहीं करते सिलेबस के हिसाब से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटेरिएट स्टेट में। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज नॉट उतना है, आपके सिलेबस में है, बट बिल्कुल भी टच नहीं करती है किसी का भी, आज तक टच नहीं किया। क्योंकि बुक में तो नहीं है। मैंने ना टॉपिक कर रही थी, तो मैंने प्रेसिडेंट, पीएम और बाकी जो भी स्टेट में और यूनियन में कर लिया, यही रहता है। मुझे ये मिला नहीं, लेकिन क्या नहीं मिला? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, हाँ, वो नहीं मिला, नहीं है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यू गो ऑन पार्लियामेंट पे जाइए और वहां पे ढूंढिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राइट। एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर रीडिंग पार्लियामेंट, इफ यू आर रिवाइजिंग पार्लियामेंट, बुक में से नहीं, मैं तो लोगों को किताब कम बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या है कि उतनी अच्छी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे, एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं है, राइट।
और जो सेकेंड स्टैंडर्ड के बुक है वो ना पढ़े तो अच्छा है। जो स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड बुक है वो ना पढ़े तो अच्छा है। आप पार्लियामेंट के वेबसाइट पे जाइए और कमिटी ऑफ पार्लियामेंट अपलोड कीजिए। पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई ना वो? हाँ हाँ हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी देखिए, या मैं आपको ना भेज दूंगा पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके ऊपर एक दो डॉक्यूमेंट, इसमें सारे जो जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी है, हाँ, पार्लियामेंट का रूल्स मेकिंग कमेटी, हाँ, जितने भी और कमेटी है ना, वो सारे इसमें दिए हुए, एक बार जरूर पढ़िए उसको। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये एक ही इसमें ना ये भी टॉपिक दिया हुआ है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ministries and departments of the union and state government. Yeah, exactly, yes. There are various, there are 38 ministries in union government, right? Ministry of Law, Ministry of, Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of, but ये सारे मिनिस्ट्री को पढ़ना इट्स नॉट, दिया हुआ तो हमें जरूर जानना चाहिए बेसिक चीज कि मिनिस्ट्री क्या है, इसका बेसिक वर्क क्या है, टास्क क्या है। right? ये भी नहीं मिला मुझे। हाँ, वो तो नहीं, वो नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, क्या नाम है इसको, लक्ष्मीकांत पढ़ी है मैंने, नहीं होगा उसमें नहीं है। आप इसको सरकारी नौकरी है, सरकारी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, सरकारी वेबसाइट पे आप मिनिस्ट्री डाउनलोड कर लीजिए, हाँ, मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऐसे डालिएगा। ऐसे लिखो या इसका कोई वेबसाइट भी है? आप गूगल पे ऐसे डालिएगा, मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरीज, सॉरी, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को अगर पढ़ना चाहती हैं तो आप पढ़िए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, बट उसको इतना फोकस नहीं करना है हमें। मुझे जैसे लगता है पार्लियामेंट्री कमेटी को फोकस करना चाहिए इसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को एक बार पढ़ ले, उतनी फोकस करने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी अलग अलग है ना? पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट अलग चीज है, पार्लियामेंट्री कमेटी अलग चीज है, राइट? पार्लियामेंट्री कमेटी इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? और हमें कमेटी पर कमेटी पर ध्यान देना है, राइट? सो जैसे स्पीकर है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और the chairman of the Rajya Sabha has certain exclusive power to make some parliamentary committee. Fine? Yes sir. So इसमें जो है क्या नाम है, लक्ष्मीकांत में, उसमें उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। It's better you go to the government site. Otherwise, I will send you one document on parliamentary committee. उसमें सारे पार्लियामेंट्री कमेटी है। ठीक है सर, ठीक है। सो एक बार मैं लास्ट में बोल देती हूँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और स्टेट का सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सॉरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये तीन जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं लास्ट में भी देख लूँ थोड़ा बहुत तो चलेगा नहीं? बिल्कुल 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 करना है दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। आज आपको डॉक्यूमेंट दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, राइट? सो अब मैं भेजूंगा, लेकिन बिल्कुल शाम को जब मैं घर जाऊंगा, दैट इज माय, वहां पे घर पे जो मेरे पास डेस्कटॉप है उसमें पड़ा हुआ है। तो कोई नहीं सर, आप यू वर सेइंग कि वो जो सिलेबस आपने बनाया एनालाइज के वो भी भेज दीजिए, वो भी भेज दूंगा, क्योंकि ना सिलेबस देख, वैसे तो मैंने पहले जब मैंने एक बार रिवीजन की तो बिना सिलेबस देखे कर ली, जैसा सर ने पढ़ाया वैसा कर लिया, बट नाउ आई एम टैलिंग इट विद सिलेबस। Exactly, you are doing great thing, you are doing great thing, that means you are concentrated, कुछ लोग तो पूरा यूपीएससी भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखते हैं, ठीक है, जो इट्स बेटर, यू आर तो इट्स ग्रेट थिंग कि आप यू आर फोकस्ड, वेरी गुड। तो सर उसके हिसाब से ना मुझे कुछ मतलब कंफ्यूजन आ रहा है, तभी मैं इतनी कंफ्यूज हो गई। इवन मैंने भी आपको इंडियन पॉलिटिक्स में शायद नहीं पढ़ाया है,
एक एक देखिए एक टॉपिक होगा पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 एंड 1952. यस सर, यस. You must go through it. Very important. हाँ, वो तो गवर्नेंस में भी कर लिया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया. वेरी गुड, वेरी गुड. गवर्नेंस में भी पढ़ाया होगा और आपको शायद पॉलिटी में भी पढ़ाया होगा. मैंने इंडियन पॉलिटिक्स में उसको नहीं पढ़ाया था. आई एम क्लियरली टेलिंग. नहीं, हमारे सर ने भी सर से डिवाइड कर लिया था, तो उन्होंने पॉलिटी में नहीं पढ़ाया, तो गवर्नेंस वाले सर ने उनको पढ़ाया था. अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड. हाँ, वेरी गुड. सो सर आप एक बार सिलेबस जैसा आपने जो एनालाइज किया वो एक बार भेज दीजिएगा. मैं भेज दूंगा. आई विल सेंड यू बाय 11, मतलब क्लास के बाद भेज दूंगा. बैठूंगा. हाँ सर, सिलेबस तो क्लास के बाद ही भेजे, क्योंकि हाँ, इसके बाद मैंने कल ही किया है एक्चुअली ये काम. एक्चुअली आई एम टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशन. जो जीएस पेपर है ना. यस सर. उसका इंटरनेशनल रिलेशन मैंने कल शुरू किया है यहाँ पर. तो फिर इसलिए उसको एनालाइज किया कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, राइट, कितना फोकस्ड होना है, राइट. पढ़ाने के लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन पता है 6 महीने भी पढ़ सकते हैं. बट उतना ही देना है बच्चों को जितना उनको जरूरत है. नहीं समझे? उनको स्कॉलर नहीं बनना है, उनको जर्नलिस्ट बनना है. हर चीज जानना है उनको. हाँ, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना. टॉपर्स बोलते रहते हैं ना सिलेबस देखो, सिलेबस देखो. तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनिशियली सिलेबस नहीं समझ में आता. मैंने कब से सिलेबस लिया हुआ है टू रीड इट, लेकिन वो जो वो नहीं होता, फोटो जूम कर करके देखो, जूम करते हैं ना हम फोटो को सर, तो वो जूम करना हमें तब नहीं आता होता, लेकिन अब आ रहा है. क्योंकि अब हमने एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ लिया है, तब अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो एक वर्ड लिखा ना इसमें टॉपिक्स हैं, वो जूम करना है. राइट, एग्जैक्टली. तो ये बाद में समझ में आता है. इसीलिए मैंने सर स्टार्टिंग में जो भी जैसे भी पढ़ा रहा था वो सिर्फ पढ़ लिया, और नाउ आई एम डूइंग कि मैं अब उससे टैली कर रही हूँ. वेरी गुड. अच्छा है कि उसमें जो जो टॉपिक है ना, आप जरूर इस जो टॉपिक सिलेबस में है उसको जरूर कवर करें. इवन जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट है उसको भी ढूंढेगा, मिलेगा. अदरवाइज आई विल हेल्प यू. राइट, टुडे मैं भी ढूंढूंगा उसको. पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट और इवन पॉलिटी में मैंने भी नहीं पढ़ा है. पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट और स्टेट सेक्रेटेरिएट और क्या है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज. हाँ, पार्लियामेंट. ये तीनों चीज मैं भी ढूंढूंगा आज की क्या है ये, अगर कितना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज यूपीएससी में बहुत कम आया है. मैंने तो क्वेश्चन एनालाइज किया है, क्वेश्चन में तो कहीं कुछ नहीं है सब चीज से. बट ऐसा इसमें दिया हुआ है. और ये भी है कि एक प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी. मैंने पढ़ाया आपको प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स में. हाँ, यस सर. और वो फॉर्मल इनफॉर्मल वो यही है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस. आपको बताया, इकोनॉमिक ग्रुप बताया, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप. हाँ, कैटेगरी ऑफ प्रेशर ग्रुप बताया, कितने ग्रुप होते, कितने तरीके के होते हैं. इंस्टीट्यूशनल, राइट. आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी प्रेशर ग्रुप पढ़ाया है. डू यू रिमेंबर? यस सर, यस. हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है, वहीं से मिल जाएगा. ठीक है. और वो सर मैंने मेल किया था, आप क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा. एनीवे वो तो संडे को, तब तक आप जब भी. मैं भेज दूंगा. राइट. चलिए, हम लोग कहाँ तक किए थे ब्रेक्जिट में? कल समझ में आया था. इम्पैक्ट लिखना था हमको, स्टार्ट करना था इम्पैक्ट से. हमने यहाँ तक किया था कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, राइट. यस सर, इम्पैक्ट ऑन इंडिया हमने लिख लिया था भाई. फॉर्मली उसने 31 दिसंबर 2020 को. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए लिखिए, इम्पैक्ट ऑन इंडिया.
Brexit impact on India. एक बार ऊपर चेक कर लें कि कुछ रहा तो नहीं, वैसे तो यही मुझे याद आ रहा है, आपने यही वाला टॉपिक नेक्स्ट बोला था। हाँ हाँ यही है ब्रेक्जिट करा दिया मैंने। ईयू तो कितने दिन से ईयू ही हम कर रहे हैं। हाँ तो लिखिए मिक्स्ड इम्पैक्ट। मिक्स्ड इम्पैक्ट पहला लिखिए। देखिए India is going to benefit. India is going to take benefit Yes, sir. of the Brexit. Yes, sir. In the both countries, India and the UK, in the both countries, comma, India and UK, again, comma, Yes, sir. there are consensus to increase bilateral trade, Yes, sir. Yeah. Secondly, India is not willing to trade with all countries of EU, with all countries of EU. Yes, sir. India wants to increase their trade linkages Yes, sir. with Germany, Italy, France, Netherlands, Spain, Sweden, and Belgium. Yes, sir. Thirdly, Yes, sir. EU had many objections on India, especially in climate change. Secondly, B, human right violation. In Kashmir, Yes. full stop.
India tried her best Yes, sir. to communicate the current situation on Kashmir to EU. In 2020, the EU leaders visited Kashmir and inspected the local situation and inspected local situation. Yes, sir. Yeah. Fourth लिखिए, fourth. Yes, sir. Okay, India's trade relation with EU was balanced. India trade relation with EU was balanced. मतलब जो मेंबर्स हैं वो तो करेंगे ही, बाकी भी जुड़ सकते हैं उससे। किससे? ये ईयू से जोड़ सकते हैं इन द सेंस कि इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया ट्रेड रिलेशन विद ईयू वाज बैलेंस्ड इन 2020। लिख लीजिए। अब यहाँ पे ट्रेड बैलेंस दिखा रहा हूँ, ये देखिए ना, ये देखिए इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, इंपोर्ट कितना करता है। देखिए इंडियाज इंपोर्ट ईयू मतलब यहाँ पे रेफर्स टू द मेंबर स्टेट्स, नो मेंबर स्टेट्स ऑफ द ईयू एक्सक्लूडिंग क्या, ब्रिटेन। So Britain is now not a member of the EU, right? हाँ, तो ये जो डेटा ये एक्सक्लूडिंग ब्रिटेन है, excluding Britain, yes. Right? लिखिए, the EU export to India is इंडियाज इंपोर्ट, अच्छा क्या लिखा, इंडियाज इंपोर्ट लिखा मैंने तो, इंडियाज, अच्छा लिखिए, नहीं इसको हम उल्टा कर देंगे। India's import to EU, export to EU is 33 billion euro, while India's export to EU, import to EU is 32 billion. यानी कि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो दोनों बैलेंस है। India's export to EU is 33 billion euro, and import is also approximately 33 billion euro, approximately 33 ही लिख दीजिए, दोनों ही वैसे ही है, राइट, या 32 लिख दीजिए एक में, कोई फर्क नहीं। कहने का मतलब है कि इंडिया का जो ईयू के साथ ट्रेड रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड है, राइट। देख लिया? Yes, sir. या देखिए, if the EU will decline, if EU would decline, then India will lose its best trading partner, one of the best trading partner, not the best, one of the best trading partner.
if EU would decline after leaving Brexit, India would lose the best. India is one of the best trading partners. Yes, sir. Fine? Yes, sir. Yeah. बस अब लिख दीजिए इंडिया EU रिलेशन. इंडिया EU रिलेशन. India EU relation. लिखा? Yes. लिखे. India is one of the oldest trading partner with EU. India is one of the oldest trading partner of EU. Yes, sir. It has established diplomatic relation with the European Economic Cooperation in 1962. India is one of the oldest trading partners of EU. It has established diplomatic relation with EU, not with EU, but EU था ही नहीं. It has established diplomatic relations with European Economic Cooperation in 1962. Remember, Paris Treaty. Paris Treaty उस वक्त Economic Cooperation का नाम हुआ करता था, right? European Economic Cooperation. हाँ. Right? Yes, sir. Yeah. In 1971 or 73, not 71, India signed a commercial cooperation agreement. India signed a commercial cooperation agreement with EEC in order to promote Indian industry. EEC. हाँ, EEC वही तो था, European Economic Council. ये तो 93-94 में बदला है ना, ये 92 में. Yes. Yeah. नाम तो यही था. Agreement with EEC. Agreement with EEC in order to promote trade and export. Yes, sir. Full stops. Similarly, India signed a commercial and economic cooperation agreement in 1981. A commercial cooperation. Economic cooperation. Commercial and economic cooperation in 1981. Yes, sir. Yeah. Okay. With the advent of liberalization, privatization, and globalization in India, with the advent of liberalization, privatization, and globalization in India, EU has increased
EU had increased Yes, sir. trade and export relations, as well as trade in services relations. Remember, जितना liberalism पढ़े हैं ना, वहीं से word वहीं से लाना है, right? Yes, sir. जो गायक होता है ना, नया जो गाना लिखता है ना, वो वर्ड कहीं आसमान से ढूंढ के नहीं लाता, है ना? पिछले गाने जो लिखे हैं ना, उसी गाने को, उसी वर्ड को लाता है और पिरो देता है, और हमें वो गाने नए लगते हैं, है ना? Yes. Yes. So you have learned liberalism, बहुत सारे वर्ड, हाँ, आपको वहीं से आपको दिमाग में रखना क्या क्या हुआ, कैसे इंटीग्रेशन बढ़ा, या मान लीजिए कुछ भी पता नहीं है आपको माइक्रो डेटा नहीं पता है, आपको मैक्रो डेटा पता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मैक्रो डेटा पता है, माइक्रो डेटा नहीं पता है, तब मैक्रो डेटा तो आपको पता है, वर्ल्ड में क्या हुआ उस समय, इंडिया में क्या हो रहा था, हाँ, थियरी क्या है, जस्ट सबको लिंक अटैच कर देना है. Yes, sir. Are you getting my point? Technique. Yes. Yes, sir. Yes. स्कॉलर जो मतलब होशियार लोग होते हैं ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और जो लोग अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, हाँ, है ना, तो वो पढ़ता रह जाता है, तो उसकी कॉपी इतनी मोटी होती जाती है ना, फिर क्वेश्चन आता, फिर से दिखता है, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, हाँ, ये तो मैंने नया क्वेश्चन देखा है. नो, क्वेश्चन बदल के आ सकता है, आंसर उसी में से आप जितना पढ़ा है आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके लिखना है, उससे बाहर नहीं है. फाइन. Yes, sir. क्या लिखा आपने? EU has increased trade and export relations as well as ट्रेड इन सर्विसेज. यूनिवर्सिटी की इंटरकनेक्शन भी तो बढ़ गया. ट्रेड इन सर्विसेज रिलेशन with India. EU has increased trade, export, as well as trade in services relations with India. Yes. Right. लिख दिया? देखिए, Yes. in 2012, EU export to India was 38.5 billion euro. Export to India. EU export to India was 38.5 billion euro. Yes, sir. आप सिंपल यूरो का साइन देकर के 38 लिख दीजिएगा, हाँ, 0.5. And EU import to India was 37 point, देख रहे, ये भी 38 पॉइंट के आसपास है, 37.3 बिलियन यूरो. Yes, sir. Right? Representing approximately 2 to 2.5% of total EU export and import. Representing approximately 2-2.5, 2 to 2.5 EU export and import to India. EU's import and export to India. हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों EU का जो इंडिया में होता है वही 2 से 2.5% के आसपास होता है टोटल एक्सपोर्ट का EU का. सिर्फ 2 या 2 से 2.5% इतना ही होता है बस. हाँ, टोटल EU का जो
EU जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 2.5% इंडिया के साथ होता है। बहुत है ये, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड समझ लीजिए, और इंडिया के साथ ट्रेड बहुत है, 2.5% बहुत है। ओके। बहुत देश हैं पूरे दुनिया में, है ना। चलिए, तो आपने ये लिख लिया, पैरा चेंज करके लिखेगा। यूरोपीय यूनियन is not happy with India's stand on climate change. India's stand on climate change, comma, Yes, sir. comma, yeah, the human rights violation in India, and एक ना मैं एक चीज बुला रहा हूँ, क्या 3 चीज था। आई हैव 3 पॉइंट की क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम है EU को, इंडियन डेमोक्रेसी से नहीं, डेमोक्रेसी से कश्मीर इशू, ना, कश्मीर इशू तो लिख दिया ना, ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर, यस राइट। लिखिए and deterioration of democratic institution in India. Deterioration or decline, as a simple word, decline of democracy in India. Yes, sir. On the other hand, yes, on the other hand, India wants to increase their trade, her trade, yes, sir, with Belgium, Germany, Spain, Netherlands, Italy, etc. yes, sir. Okay. The major trade between EU and India, the major trades between EU and India are transport equipment, manufactured goods, Major trade between EU and India. are transport equipment, Yes, sir. chemicals, Yeah. crude materials, Crude. crude materials, Yes, sir. mineral fuels, Yes, sir. manufactured goods, pharmaceuticals, Yes, sir. etc. Yes, sir. Okay, India and EU both seek each other as a positive partner in the contemporary world.
Yes, sir. डन? Yes. चलिए, हो गया। अब आइए नाफ्टा। तो हम लोग कितने दिन से हो रहा है ना, एक दिन एक्सप्लेन किया, कल लिखाया, कल भी पूरा नहीं हुआ, आज खत्म कराया हमने, ना? Yes. चलिए नाफ्टा। नाफ्टा जैसे नाफ्टा है वैसे एक लाफ्टा है, बहुत सारे एग्रीमेंट है। लाफ्टा मीन्स लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? हाँ, तो हमें लाफ्टा नहीं पढ़ना है, हमें नाफ्टा पढ़ना है। हाँ, ओके। LAFTA है ना, बहुत सारे है। तो लाफ्टा क्या है, आपको पता है ना, लैटिन अमेरिका। यस सर। कहीं पे मैंने पिक्चर डाला होगा अगर वर्ल्ड का, यस, ये नॉर्थ अमेरिका का, ये नॉर्थ अमेरिका का है। वो मैं वर्ल्ड पिक्चर नहीं डाला है क्या, नहीं पे, चलिए नहीं डाला है। तो लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है, आपको पता है ना, पेरू, बोलिविया, चिली, ब्राजील। ब्राजील इज अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, राइट? ये पूरा जिसको कह सकते हैं साउथ अमेरिका, ये पूरा लैटिन अमेरिका। एग्जैक्टली। So South America is also known as Latin America, right? तो वहां पे एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं लाफ्टा। और ये नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं नाफ्टा, राइट? और नाफ्टा में मात्र 3 कंट्री है। हाँ, वो कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, राइट? नाफ्टा में कितने कंट्री है? मात्र 3 पहले। हाँ, देखिए ये तीन झंडा है ना, यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर 3, देखिए इन्होंने बाद में अब ये बना लिया है USCM में नाफ्टा को, जिसको बोलते हैं नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा 2.0, राइट, इज इक्वल टू USCMA। बोलेंगे सर USCMA क्या होता है? US, हाँ, C से कनाडा और MA से मैक्सिको। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो नाफ्टा का नाम बदल के हो गया MEU होता है, तो ये हाँ, सॉरी सर, आई एम सेइंग कि वैसे तो मैक्सिको ME होता है, बट ये इन्होंने नहीं, मैक्सिको MA लिखते ना, नहीं मैक्सिको ME लिखते, ME लिखते, बट MA है, कोई बात नहीं। उन्होंने USA का A वर्ड भी इसी में घुसा दिया, ठीक है? अब देखिए ना, C कनाडा से A, और अब जैसे नाम है, तो मान लीजिए हम MA को मानते हैं, मैक्सिको को मान लेते हैं, राइट? MA को, US को US मान लेते हैं, C को कनाडा मान लेते हैं। तीनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उसमें से सबसे ज्यादा घाटा होता है कनाडा को, राइट? अभी बताएंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, डेटा बताएंगे। तो नाफ्टा में कितने कंट्री हैं? 3 कंट्री, ठीक है? US, मैक्सिको एंड कनाडा। ये नाफ्टा 2.0 आ गया। चलिए अब पढ़ लेते हैं। ये नाफ्टा आया था 94 में। देखिए, जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है, ये बड़ा ही टर्मिनेटिव, यू नो, वेरी, इट वाज अ जंक्चर ऑफ हिस्ट्री, इन अ हिस्ट्री। जंक्चर मतलब समझते हैं? यस सर, जहाँ पे 2 चीजें मिलती है। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल चीजें बदल जाती है वहां पर, ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल चीजें एंड ऑफ कोल्ड वॉर में बहुत चीजें बदल गई। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदल गई, रशिया की फॉरेन पॉलिसी बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। यस सर। इंडिया में लिबरलाइजेशन हो गया, राइट? तो 90 के बाद, देखिए 90 के टाइम पे बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि पता चल गया कि इट इज अ ट्रम्प ऑफ लिबरलिज्म,
only free trade is possible and beneficial. मैंने आपको बताया है एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा. यस सर. राइट. तो उस वक्त देखेंगे आप, देखिए शार्क भी उसी वक्त आया है, उसके बाद बहुत सारे आए. उससे पहले जो थे उसमें एशियन था, उसमें यूरोपीय यूनियन था. फाइन. और एक आध अफ्रीका में था. चलिए लिखिए नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. लिखिए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा. टाइटल दीजिए और लिखना शुरू कीजिए. देखिए इट इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस. It is a free trade agreement between Canada, Mexico, and the US. Yeah. Yes, sir. Okay, it is a free trade agreement between Canada, Mexico, and the US. It came out as NAFTA negotiation. It came out as a NAFTA negotiations in 1992. In 1992. Which came into force in 1994. नेगोशिएशन 1992 में ही हुआ और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1994 में. हाँ देखिए, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एवर नेगोशिएटेड. It is the most comprehensive free trade agreement ever negotiated. It has created world's largest market for goods and services. It has created. It has created world's largest market for goods and services. Fine? Yes. Okay. The NAFTA agreement eliminated all kinds of tariffs between three countries, namely Canada, Mexico, and the US. Yes, sir. Fine? Yes, sir. Okay. It has also incorporated many innovative provisions for free trade. Fine? Yes, sir. पैरा चेंज करके फिर लिखिएगा. लेकिन NAFTA changed the economic relation in North America. NAFTA changed the economic relation in North America and promoted
and promoted unforeseen, पता है अनफोर्सीन का मतलब कभी ना देखा हुआ, यस जैसे हम एक्सपेक्ट ना करते हो, जैसे हम हाँ, या इसके बदले में एक और वर्ड लिख सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, प्रेसिडेंट या प्रेडिक्टेड, नहीं अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभी कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। जैसे अनफोर्सीन का मतलब है, सेम मतलब है अनप्रेसिडेंटेड, राइट। तो जो आपको अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे आप लिख लीजिए। इट हैज प्रमोटेड, जो आपको क्या लिखा वो बता दीजिए। NAFTA changed the economic relation in North America and promoted unforeseen complex interdependence। देखिए सारे लिबरल है ना, yes sir, सारे बिल्कुल इसको वहीं से वर्ड लाना है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, complex interdependence between Canada, the US and Mexico। yes sir, या सो ये अनप्रेसिडेंटेड वर्ड बहुत यूज होता है, हिंदू पढ़िएगा बहुत लिखा रहता है। अनफोर्चुन भी लिखा रहता है, अनफोर्चुन हम कॉमन बहुत ही एक्चुअली ये लैंग्वेज हो जाता है, अनप्रेसिडेंटेड एक थोड़ा सा लैक वर्ड से बहुत फर्क पड़ता है। अनफोर्सीन वहाँ बजट वगैरह में भी बहुत यूज होता है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, राइट राइट राइट, बट ये हाँ पॉलिटी का वर्ड हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या लिखा आपने सर? एंड प्रमोटेड अनफोर्सीन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस between Canada, the US and Mexico. Mexico. It has increased regional trade and cross-border investment. Cross-border investment. Yes sir. Between three countries. Yes sir. Yeah. Okay. Through NAFTA, Yes sir. trade has increased. Trade has increased from $290 billion $290 billion Yes sir. $1 to $1.1 trillion। हाँ लिख लीजिए 190, इसमें टाइम लिखना पड़ेगा ना, आपको पता भी रहना चाहिए कि ये कब था और ये कब था, राइट। $290 billion in 1993, ब्रैकेट में डाल दीजिए, to 1.1 trillion in 2017। $290 billion था 1993 में,
जो कि 2017 में आके कितना हो गया, $1.1 ट्रिलियन। फाइन, यस सर। मतलब पॉजिटिव है कि अच्छा ही हुआ है इससे, अच्छा हुआ, या ओवरऑल अच्छा हुआ। फाइन, यस सर। देखिए फिर चेंज कर दीजिए पैरा, फिर लिखिए विद द एडवेंट ऑफ न्यू प्रेसिडेंट, कॉमा डोनाल्ड ट्रम्प इन द यूएस। एडवेंट सही वर्ड है? नहीं, या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फिर मत लिखिए ऐसे। एडवेंट मतलब होता है किसी का आना, वर्ड है, ठीक है, ऐसे लिखिए। द यूनाइटेड स्टेट launched a new trade negotiation The United States launched new trade negotiations with Canada and Mexico soon after President Trump came to power. yes sir. President Trump came to power, right? Fine. Yes. The US aim was मतलब कि is लिखिए. The US aim is to promote high-paid jobs, high-paid jobs and economic growth. Yes, sir. Okay, in 2017, in order to do this, in order to promote high-paid jobs and economic growth, comma, the President Donald Trump, the US President Donald Trump Yes, sir. Yeah. Donald Trump, comma, Canadian Prime Minister Canadian Prime Minister यहाँ पे लिखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? Trudeau. Yeah, Trudeau. And Mexican Prime Minister Pena Nieto. याद ना रहे तो सीधा लिखिएगा, the US President Trump signed an agreement, with Mexico and Canada, that is called the US-Mexico-Canada agreement. Oh, A is the agreement. Signed a trilateral US-Mexico-Canada trade agreement. Yes, sir. क्या लिखा? In order to promote high-paid jobs and economic growth, the President Donald Trump, Canadian President Trudeau, and Mexican President Pena Nieto signed
signed a trilateral agreement called as NAFTA 2.0. Called as NAFTA 2.0, right? Yeah. Right. Okay. The trilateral agreement is also known as USMAC. USMCA. US मतलब US, M मतलब Mexico, C means Canada, A means agreement. Right? Fine. Yes. Yeah, इसको USMCA भी बोलते हैं. ठीक है, अगर इसको हम एक वर्ड में बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते ना? नहीं. प्रोनाउंस नहीं कर सकते ना? नहीं. जैसे नाफ्टा कर लेते वैसे या नहीं हो सकता. हाँ? नो, ये तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा ना. ऐसे बन नहीं रहा है. हाँ, ऐसे USMCA कहना पड़ेगा. Anyway. लेकिन गोल ऑफ नाफ्टा. Goal of NAFTA. The goals of or objectives of NAFTA. Yes, sir. Yeah. Okay. Grant the most favored nation status. To grant most favored nation status to each other. दूसरा लिखिए. To eliminate barrier to trade. Third लिखिए. To promote condition for fair competition. Yes, sir. To increase investment opportunity. Yes, sir. To provide protection and enforcement of IPR, intellectual property rights. Yes, sir. To create Yes, sir. Procedure for the resolution of trade disputes. To create procedures for the resolution of trade disputes. Yes. Yeah. To establish framework to expand trade agreements benefits. Last का क्या है sir? To establish. To establish framework to expand trade agreements benefit. Yes, sir. Done. Yes. Very good. Surely. समझ में आई है नाफ्टा? Yes, sir. कुछ नहीं है.
चलिए, और आप लिखिए नाफ्टा 2.0, द न्यू नाफ्टा एग्रीमेंट, लिख दीजिए न्यू नाफ्टा एग्रीमेंट। US, Mexico and Canada। मजा रन पढ़ने में ये सब चीज। यस सर। राइट, कि कितना हाँ वो कनेक्टेड नहीं है होता चीजें। कि अभी आपने जो लिखवाया ना, एक लाइन लिखी थी यहाँ पे 2013 वाली कहीं पे, कि 2013 में EU विजिटेड, सॉरी नाफ्टा में नहीं, EU में, कि EU लीडर विजिटेड कश्मीर 2013 में। तो 2013 में आई ज्वाइंड कॉलेज, फर्स्ट ईयर था। नहीं, तो 2020 में विजिट किया था, लास्ट ईयर। 13 लिखा। No, it's due 2020। In the 2020 the EU, अब पता नहीं है कि जब मोदी जी आए हैं और ये जब ये लगा है, जब ये कश्मीर से हट गया है ना, क्या नाम है, कश्मीर का स्टेटस जो था, स्पेशल स्टेटस, EU को बहुत प्रॉब्लम था, इवन US को भी बहुत प्रॉब्लम था। US कांग्रेस ने तो रिजोल्यूशन निकाला अपने वहां पर कि क्या हो रहा है वहां पर, और बोला भी था हमारे यहाँ से कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। राइट। ये जो विजिट हुआ था मैक्स, इसका किसका, EU लीडर का, EU का, वो 2020 में हुआ था, द लास्ट ईयर। आई एम टेलिंग यू, इन फैक्ट कब हुआ था, स्टार्टिंग में ही आए थे वो लोग, स्टार्टिंग में बिल्कुल। हाँ, फरवरी मार्च में। यस, जून मई जून में नहीं आ सकते, वो चल जाएंगे यहाँ पर। हाँ, हमको बहुत डर लगता है गर्मी से। हाँ, do one thing, if you can you send me the entire notes of the IR? I will read it. कहीं पे कुछ issue है, then I will check it and will tell you. नोट्स ऑफ IR मतलब आप जो नोट्स बनाती हैं, उसका टॉपिक वाइज मुझे नोट्स फोटो खींच के भेजते रहिए, जैसे आप भेजती हैं PDF बना के। मैं एक बार रीड करके बताऊंगा आपको कि कहाँ पर क्या आपने कुछ, अगर ऐसा कुछ है तो एरर, so that we can make the notes error free, right? Yes sir. Error is a common issue, don't know, there may be possibility, right? So अगर ऐसा होगा तो then I'll help you to just erase them, yeah, change them. तो स्टार्टिंग से करूं जो टॉपिक है? As you wish, अगर आपको करना है तो मुझे जैसे कि सैटरडे में अगर भेज देंगे तो मैं संडे तक आपको कमेंट भेज दूंगा। Are you getting my point? यानी कि आप 2 टॉपिक का एक दिन में, एक सप्ताह में भेज दिया, 3 टॉपिक का एक सप्ताह में भेज दिया, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मैं संडे को आई ट्राई की मैं मॉर्निंग में भेज दूं, क्योंकि हाँ, संडे को मॉर्निंग में भेज दीजिए जितना हो सके, फिर हर संडे को आप चेक करा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। Right, because we are not meeting physically, I am not able to see your notes कि क्या लिख रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स ऐसा है कि जैसे अभी 2013 की बात बताया ना, तो मुझे लग गया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है, यू नो, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माय साइड। कभी मैं सोच कुछ रहा हूँ और लिखा, मतलब ईयर में थोड़ा सा 2020 के बाद मैंने बोल दिया 2013 बोल दिया होगा, राइट? तो दैट विल बी एरर फ्री, गुड फॉर यू। ओके सर, टेस्ट भेजती हूँ तो उसी दिन संडे को फिर मैं आई विल ट्राई टू सेंड 2 टॉपिक्स। हाँ, 2-3 टॉपिक्स 20-22 पेज भेज देंगे तो मैं 20-22 पेज, मतलब मुझे पौन घंटा लगेगा पढ़ने में, 1-1.5 घंटा, राइट? 1 घंटा, पौन घंटे से 1 घंटा। I'll read it and then will tell you, it's okay, it's fine, या कहीं पे कुछ चेंज करना है, right? Sure sir. So yeah, so do it, it would be good. Now come to the new NAFTA agreement, the US, Mexico and Canada. अब मुझे लगता है नाम का मतलब नहीं बताना पड़ेगा, you don't know, right? Yes sir. हाँ, अब क्या न्यू चीज आया है 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप ने लाया है, उसके बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा फिर एनालिसिस करेंगे नाफ्टा का, राइट? Yes sir. अच्छा,
नाफ्टा 2.0, इसको भी नाफ्टा 2.0 भी बोलते हैं। फाइन, लिखा दिया पहले। यस सर। हाँ, और इसको USMCA भी बोलते हैं। फाइन, यस सर। ओके, देखिए नाफ्टा 2.0, नाफ्टा 2.0 अब कब आया मैंने लिखा था, पहले लिखा चुका हूँ, राइट। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने और इन लोगों ने किया था, राइट। अब क्या मेजर एम्फेसिस है, देखिए नाफ्टा 2.0 emphasized on automotive, देखिए नाफ्टा 2.0 emphasized on automotive, textile and apparel sector. नाफ्टा 2.0 emphasize और नाफ्टा 2.0 पूछेगा, समझे। तो नाफ्टा 2.0 को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा, अगर कुछ करना हो सिंपल बोलिएगा, नाफ्टा 2.0 is an updated version of NAFTA, right? Came into being, you know, after 2007 when President Trump made a tripartite, you know, tripartite or trilateral agreement with Canada and Mexico. Fine? Yes, sir. Right. Look at NAFTA 2.0 emphasized on automotive, textile and apparel sectors. Yes, sir. Yeah. It has extensively liberalized agricultural trade. It has extensively liberalized agricultural trades and other trades. Yes, sir. Fine? Yes, sir. Yeah. Okay. NAFTA 2.0 NAFTA 2.0 keeps eye on Yes, sir. keeps eyes on the origin countries, that is origin of trade, commerce and services. एक सेकंड सर, keeps an eye on origin countries. origin country, कहाँ से origin हो रहा है, यूएस से हो रहा है कि कनाडा से हो रहा है कि मैक्सिको से हो रहा है, राइट। Yes, sir. आगे on origin countries. Origin countries, right? In Full stop. origin countries of trade, commerce and services. Yes, sir. It has updated Yes, sir. trade facilitation measures, यानी कि ट्रेड कैसे अच्छे से होगा उसके लिए जो भी मेजर है ना उसको अपडेट किया है। It has updated trade facilitation measures Yes, sir. fine. It has negotiated on new labor law required for
auto sectors, new labor law required for auto sectors, Yes, sir. auto sectors, full stop. Okay, NAFTA 2.0 gives more benefit to US, more benefit to US. Yes, sir. Right? Okay, 5 key provisions of US MCA is equal to NAFTA 2.0. NAFTA 2.0. 5 key provisions of US MCA. NAFTA 2.0. Yes, sir. या पहला लिखिए लिखिए Yes, sir. high value content, high value content in vehicles and auto parts, क्या लिखा? Yes, sir. क्या लिखा? High value content in vehicles and auto parts. auto parts. दूसरा लिखिए new labor value required for auto sector, Yes, sir. third लिखिए strict rules of origin for USMCA textile and apparel trade, Yes, sir. yeah. Fourth लिखिए extensive liberalization of agricultural trade, extensive liberalization of trade in agricultural trade, Yes, sir. yeah. इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए देखिए the NAFTA 2.0 Next. gave इसी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए चौथा में नहीं इसी में एग्रीकल्चरल ट्रेड में जो लिबरलाइज हुआ ना यूएस को बहुत फायदा दे रहा है किस तरह दे रहा है बता रहा हूं इसमें लिख लीजिए इसी में it has given US access to Canadian market. Yes, sir. Canadian market, right? Yes, sir. And reduced US barriers and reduced US barriers on Canadian dairy, sugar and sugar products. On Canadian, dairy. Canadian dairy, yeah, Canadian dairy, sugar and sugar products, peanuts and peanuts products, etc. Last point. It has updated trade facilitation measures.
सिंपल जो ऊपर भी लिखा चुका हूँ, ये रिपीटेटिव हो गया। Yes, sir. देखिए देखिए, in NAFTA 2.0, comma, not all countries are gaining equally. In NAFTA 2.0, not all countries are gaining equally or benefiting equally. Right? So NAFTA 2.0 mein all countries are not getting benefit equally, right? Yes, sir. Okay, Mexico and US are gaining. Mexico and US Mexico and the US is gaining, whereas Canada suffered. Yes, sir. However, full stop. However, Yes, sir. the real wages has increased in all NAFTA countries. However, wages, जो wage है ना, individual सबका income, wages increased for all NAFTA countries, and Mexico is the largest gainer. Yes, sir. Fine. In terms of trade, effect, comma, the Mexico's and Canada's trade has deteriorated, whereas the US trade has increased. This is new data, right? Yes, sir. Yeah. अब परसेंट मत लिखिए, इतना परसेंट, क्योंकि याद नहीं रहेगा एग्जाम में पक्का। एक आइडिया ले लीजिए कि भाई साहब जो एक रियल इनकम वेज है वो बढ़ा है तीनों कंट्री में, लेकिन जब आप होलिस्टिकली बात करेंगे तो मैक्सिको और यूएस बेनिफिट में है, कनाडा लॉस में है, राइट? यस सर। कंपैरेटिवली जब ट्रेड की बात करेंगे तो ट्रेड में मैक्सिको और कनाडा का घाटा हुआ है, मतलब लॉस में गया है, और जो यूएस है वो उसको गेन हुआ है। फाइन? यस सर। बस इतना ही जानना है। न्यू डन, नाफ्टा डन, न्यू नाफ्टा। राइट? यस सर। सो ये कुछ डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, यू नीड टू नेसेस, कोई जानना ही नहीं, मैंने लिखा दिया वो सफिशिएंट है। ओके सर। जैसे कनाडा डेयरी मार्केट जो प्रोजेक्टेड था, मैंने लिखा दिया कि जो एक्सटेंसिव लिबरलाइजेशन हुआ ट्रेड मार्केट में, अच्छा एग्रीकल्चरल ट्रेड में, राइट? और मैंने ये भी लिखा दिया कि कौन सा मार्केट किसके लिए खुल गया, राइट? तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता है कि जो नया नाफ्टा 2.0 आया है ये 3 ट्रेड में, याद रखिए 3 ट्रेड पे फोकस करता है। एक ऑटोमोटिव पार्ट, यस सर, यानी ऑटोमोबाइल्स, ट्रक, गाड़ी,
इसी का तो जमाना है आजकल। यस सर। दूसरा है अपैरल सेक्टर, राइट, एंड तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। फाइन। यस सर। लिखिए एपेक। आ जाइए एपेक, ये अजूबा सा एक संस्थान है एपेक। हाँ, देखिए कैसे संस्थान है, पूरी दुनिया, मतलब कोई रीजनल ट्रेड नहीं है। हमने जो थियरी पढ़ी है ना रीजनल ट्रेड, वो थियरी यहाँ पे डेमोलिश हो जाती है एपेक। लिखिए नाम ही है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनका, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक। लिख दिया? यस सर। डन। लिखिए एपेक हैज 21 members. APEC has 21 members. It was created in 1989. तभी ये बना है। It was created in 1989 in order to facilitate economic growth. In order to facilitate economic growth, investment and trade. Yes sir. Right. देखिए the globalization has promoted not only flow of trade, commerce, capital, people, culture, MNCs and TNCs, Yes sir. क्या लिखा? It was created in the globalization has promoted not only flow of trade, commerce, capital, people, culture, MNCs, TNCs worldwide, it has also facilitated, के अलावा एक वर्ड है catalyzed. You know catalyzed, आपने वर्ड सुना है? Yes. हाँ, catalyzed. Yes. स्पेलिंग मैं बहुत दिन के बाद ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया। CATALYSET. कैटलिस्टिक इफेक्ट होता है ना, कैटलिस्टिक इफेक्ट साइंस में बोलते हैं। ये सब कैटलिस्ट की तरह उसको यूज किया जाता है, मतलब फिर वो व्हाट इज द स्पेलिंग? CATALYSIST। हाँ, ओके। क्या लिखा आपने? वाई के बाद आई नहीं होता, कैटलिस्टिक। अच्छा, आई नहीं होता, एनीवे चलो मैं मिटा देता हूँ। हाँ, राइट। क्या लिखा आपने? It has also facilitated or catalyzed new formation of organization worldwide. Yes. इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो पेस है ग्लोबलाइजेशन का,
90, 70, 80, 90 के बाद जो बढ़ा है, इससे केवल कनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस और जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, कॉमर्स, कल्चर जो भी आया है, ये इतना तक सीमित नहीं रहा है। इसने प्रमोट किया है कि कैसे दुनिया में एक अलग अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना। राइट, डिड यू गेट द सेंस? यस सर। राइट, देखिए फुल स्टॉप लिखिए, the epic is one of them, the epic is one of them, the epic is one of them. फाइन? यस सर। पैरा चेंज कीजिए और लिखिए, epic brings together a geographically diverse membership. Epic brings together a geographically diverse membership, namely, एपेक का फुल फॉर्म लिख लिया ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यस सर। हाँ, देखिए क्या लिखा, एपेक ब्रिंग्स टुगेदर ज्योग्राफिकली डाइवर्स मेंबरशिप, राइट? यस सर। हाँ, कॉमा, नेमली, अगेन कॉमा, नाम लिखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देखिए कहाँ कनाडा कहाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ, न्यूजीलैंड, चाइना, कहाँ न्यूजीलैंड कहाँ चाइना, हांगकांग, चिली, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, राइट? यस सर। देखिए चिली, पेरू, रशिया, वियतनाम, पापुआ गियाना, न्यू गियाना, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जोड़िए तो 20 हो गया, 21 हो गया टोटल जोड़ के। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग नहीं लिखा, हांगकांग तो लिखा देते मैंने। नहीं, अच्छा मैंने नहीं लिखा, हो सकता है। अच्छा, आप, हाँ, आपने स्किप कर दिया हुआ। हांगकांग, सिंगापुर, चिली लिखा, मैंने लिखा, चिली लिखा, लिखा। अच्छा, चाइनीज तापाई लिखा, चाइनीज तापाई, नहीं लिखा, चाइनीज तपाई। हाँ, देखिए हो गया, पपुआ न्यू गियाना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी भी 16 है। अभी भी 16 है। अच्छा, यूएस को लिखा, यूएस ने लिखा 18। यूएस, कनाडा लिखा है, लिखा, इंडोनेशिया 18 19। मैक्सिको, यस सर। रशिया मिलाइए ना, 20 आपके सामने, 21। ये हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम थाईलैंड वगैरह भी तो है। हाँ, वियतनाम लिखिए, वियतनाम, थाईलैंड, 16 17 18 19 20। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, डन सर, डन। 21 हो गए। ब्रुनेई लिख लिया, 21। अच्छा, अब देखिए कितना डाइवर्स है ग्लोबली। अब इसको हम रीजनल ग्रुप नहीं कहेंगे,
right? We cannot say it a regionalization of world politics. No, it is a really globalization. It is a global institution, right? Fine. Yes, sir. Got idea? Yes, sir. Right. Okay. APEC was established to emphasize on sustainable economic growth and prosperity. And prosperity. And prosperity. Yeah. Yes, sir. Okay, the result of APEC is not so positive like EU. देखिए यहाँ भी 21 मेंबर है और EU में भी 27-28 मेंबर है, 27 मेंबर है, राइट? बट इसका जो फंक्शनिंग है और EU में बहुत अंतर है. EU इज एक्सेलेंट, फाइन. यस सर. क्या लिखा आपने? ज्योग्राफी का भी तो फर्क पड़ता है ना वहाँ पे. हाँ, ऑफ कोर्स ज्योग्राफी का फर्क पड़ता है. ज्योग्राफी का फर्क पड़ने से कल्चर का फर्क पड़ जाता है. यस. और ये तो कोई उधर नॉर्थ में किधर कहीं. हाँ, इसमें एक रशिया है और एक यूएस है. हाँ, एक इधर चलता है तो उसके अपोजिट में चलने लग जाता है. हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया, एक पेरू, चिली है. हाँ, राइट. लिखिए क्या लिखा आपने? रिजल्ट ऑफ एपेक वाज नॉट सो पॉजिटिव. नॉट सो पॉजिटिव. हाँ. And economic cooperation is very low. And economic cooperation is very, very low. Yes, sir. Okay, member states of APEC have agreed to low trade barriers and tariffs. Low trade barriers simple. उसी barriers के अंदर tariff आता है. Member states have agreed to low barriers, trade barriers, but there is no formal mechanisms to enforce it. देखिए EU में पूरा इंस्टीट्यूशन है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर उसका कमी है, राइट? हाँ, तो ये सब कुछ है. अब डिबेट हम फंक्शनलिज्म से शुरू किया था, याद है आपको? यस सर. फिर से आगे हम फंक्शनलिज्म पे पैरा चेंज करिए और लिखिए. देखिए, the debate on functionalism and new functionalism is still under contestation. The debate between functionalism and new functionalism is still contested. If we see EU, it is most successful. Yes, sir. But in case of APEC, it is not. Yes, sir. Right? Okay. In APEC, there is a lack of institutionalization. There is a lack of institutionalization of economic cooperation.
Yes. Right? Yes, sir. पैरा चेंज कीजिएगा. देखिए, let's compare EU, NAFTA and APEC. If we compare, पैरा चेंज करके लिखा EU, NAFTA and APEC. If we compare EU, NAFTA and APEC, we see diverse result. Yes, sir. Yeah. देखिए, in EU, okay, in EU, member state like Germany and France, in EU, member state like Germany and France क्या लिखा? In EU member states like Germany and France embarrassed multilateralism. Germany and France embarrassed multilateralism. Multilateralism and Europeanism over nationalism. In case of Germany, in case of EU, Germany and France embraced multilateralism and Europeanism over nationalism. Right? French nationalism or German nationalism. Fine? Yes, sir. Over French nationalism or German nationalism. ऐसे करके लिखिए तो clear है और clear हो जाता है. Over French nationalism or German nationalism. Okay, but लिखिए in the case of APEC, Yes, sir. but in the case of APEC, the sense of supranational institution is lacking. Supranational Institutions or notions lacking. Yes, sir. Got point? Fine? Yes, sir. The same happened with NAFTA. Same happened with NAFTA. अब यूरोप में देखिए जर्मन नेशनलिज्म को छोड़ करके या फ्रेंच नेशनलिज्म या इटालियन नेशनलिज्म छोड़ करके लोग यूरोपियन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन सिटीजन की बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, हाँ यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, राइट? सो नेशन छोड़ करके लोग सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन नाफ्टा और एपेक के केस में क्या होता है, हम नेशनलिज्म से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे. अमेरिका फर्स्ट, राइट? Yes, sir. और इसी कारण से जो एपेक और नाफ्टा का फंक्शनिंग है, इट्स वेरी मच लैकिंग, राइट? Yes, sir. Why? So did you get why EU is most successful institution? Yes, sir.
हाँ, बिकॉज ऑफ फंक्शनलिज्म, राइट। वहां पर पॉलिटिशियन को साइड करो और एक्सपर्ट को मिलने दो, राइट। यस सर। इतना ही है, ये मत लिखिए, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। लिखा यहाँ पे एनालिसिस हो गया एपेक, नाफ्टा और ईयू का। व्हाट इज एपेक? कुछ डेटा लिखना है क्या? कुछ डेटा अगर एपेक के ऊपर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज डेटा याद नहीं रहता है। टेलिंग यू कितना डेटा है ना, आप कितना डेटा याद करेंगे, इतना परसेंट उतना परसेंट। हाँ, अभी तो लगेगा याद हो गया, लेकिन फिर तब लिखते हो नहीं याद रहेगा। हाँ हाँ, वो सब गोबर हो जाएगा। नीलबट्टा सन्नाटा। हाँ, यस सर। एक मूवी भी आई थी नीलबट्टे सन्नाटा, देखा था क्या? देखा नहीं है, पता है। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी। ठीक है, G7। अब G7, बट G7 आज नहीं हो पाएगा। G7 बहुत ही एक पेज का है। मैं उसके बाद G20 है, उसके बाद OECD कंट्रीज है, ये भी एक पेज का है। रिसेंट वाला करेंगे ना, जो अभी रिसेंट भी हुई है। हाँ, क्या बात हुई है, बस कर देंगे क्या बात हुई है। ठीक है, फिर ब्रेक्स करेंगे। ठीक है, फाइन। ब्रिक्स को ध्यान से, ब्रिक्स जैसे यू करा है वैसे ब्रिक्स करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ब्रिक्स को उतना ध्यान कि उतने है ही नहीं था ब्रिक्स का। 2009 में आया है तो क्या होगा अभी तक, बट इमर्जिंग इकोनॉमी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, यस। ओके, सो एज ऑफ नाउ हम लोग और कुछ बताइए, बता देता हूँ एक चीज। देखिए, ये देख रहे हैं आप G7, यस सर। ये 7 कंट्री है। एक था 8वां, उसको भगा दिया, रशिया को भगा दिया 2014 में। अब बचा है G7। ओके, यस सर। G7, और फिर G7 ने 5 कंट्री को गेस्ट का स्टेटस दिया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं G7+5, राइट। यस सर। तो G7+5 कौन है? ये है चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स 1 2 3 4, ब्रिक्स प्लस मैक्सिको, याद रखिएगा। कौन है G5 में? BRICS 1 2 3 4 5, बट इसमें देखिए ना, चाइना है, साउथ अफ्रीका भी तो है ना। 1 2 3 4 से सर क्या नहीं? हाँ, है, मैक्सिको नहीं है ना। तो ब्राजील, BR से ब्राजील है ना, am I right? नो, रसिया। इसमें रसिया नहीं है, इसमें रसिया नहीं है, रसिया नहीं, रसिया को भगा ही दिया है ब्रिक्स में से। हाँ, पहले रशिया के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ। हाँ हाँ, तो हमको ये ब्रिक्स याद रखना है, और प्लस मैक्सिको। बोलते तो लेकिन अभी भी वो ही है। कौन? ब्रिक्स बोलते हैं या नहीं? नहीं, G7+5 में ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो है। ब्रिक्स तो अलग सी कंपनी, अलग सी ग्रुपिंग है। ब्रिक्स अलग से मैंने क्या बताया, देयर आर G7 में कौन कौन है आप बताइए, दिख रहा है? यस सर। कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। यस यस, और इन्होंने 5 गेस्ट बुला रखे हैं। 5 गेस्ट कौन कौन है? ब्रिक्स के चार कंट्री है प्लस मैक्सिको। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बस ये आ जाएगा, G7+5 में कौन कौन कंट्री है, और इसमें आपको एक कंट्री कोई नया दे देगा, एक कंट्री हटा देगा। फाइन, यस सर। करेंगे कल, आज नहीं, और कल ग्रुपिंग हम खत्म कर लेंगे। फिर
जो हमारा एशियन है, जब हम इंडिया का रिलेशन करेंगे फॉरेन, सेकंड पॉइंट में एशियन और सार्क हम करेंगे फॉरेन पॉलिसी में, राइट। तो मंडे से मैं फॉरेन पॉलिसी शुरू कर दूंगा। इंडिया चाइना रिलेशन पहले करते हैं। कुछ चीजें हमने एक एक दो दो बीच में छोड़ा हुआ है, वो कब करेंगे? क्या क्या? जैसे वार ऑन टेरर। एक सेकंड सर, एक तो यस, एक तो वॉर ऑन टेरर है, और एक सेकंड सर, इस टॉपिक में ये सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ट्रांसनेशनल एक्टर यही सब तो है, यही तो है। G7 G5 भी ट्रांसनेशनल एक्टर है। WTO क्या है? ट्रांसनेशनल एक्टर है। एक कॉन्सेप्ट था वो नेशनल सिक्योरिटी का, वो नहीं किया एक तुमने, और ऊपर नेशनल सिक्योरिटी या थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये करवाना फॉरेन पॉलिसी में करवाना। That we will do in foreign policy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइज, ये तो खैर हो गया ग्लोबलाइजेशन, तो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने नहीं किया। हमने जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था तो हमने डेवलप्ड कंट्रीज का पढ़ लिया था। यस सर, हाउ डेवलप, वही है वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन है? US, EU। फाइन। यस सर, हाँ, ओके। और फिर देखेंगे अगर बाद में उसको। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। ओके सर, See you tomorrow then। हाँ, ओके सर, बाय, थैंक यू बाय सर। बाय। वो सर आप सिलेबस भेज दीजिएगा। पक्का पक्का, I'll do it। अभी भेजिए। ओके, अभी भेज दो। ओके सर, थैंक यू। Most welcome। See you tomorrow then। ओके सर, बाय सर। Bye bye।